UG EAC 2025, the Bihar Undergraduate Engineering Admission Council. UG EAC process जो है वो handle होता है by the Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board. Candidates may apply for admission to the BE or BTech courses in the government engineering colleges of Bihar and should have secured 50% in general category and 45% in reserve category as PCM their सब, जैसे कि SGI DT पटना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दरभंगा, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, MIT मुजफ्फरपुर एक्सेट्रा एंड द लिस्ट गोज ऑन. Registration for UG EAC is open with the last date to apply being 4th June 2025. BCE CEB will allow registered candidates to correct their UG EAC Counseling 2025 application form from 5th to 6th June. अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो application process है अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं. First of all, what you have to do, you have to visit the official website beceboard.bihar.gov. Register with your JEE Main 2025 application number and date of birth. Third number पे fill out the online application form, personal information, education details and upload the required document. When we talk about the payment of the application fee, तो ये रहेगी ₹1,200 अगर आप unreserved या EWS कैटेगरी से हो तो ₹600 रहेगी for the SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए. If the amount paid as counseling fee is debited, for example जैसे कि आपने अमाउंट पे किया है काउंसलिंग फी में और वो डेबिटेड हो जाता है आपके अकाउंट से, बट यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो फेल बताता है, तो इन सच केस व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट रीपे द डिजायर्ड फुल फी एंड एंश्योर द पेमेंट. If your required counseling fee does not reflect in board's account within the due date, your application form will remain incomplete and will be rejected. तो ध्यान रहे ये चीज हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है. Your failed transaction will be refunded to your account. BCE CEB will conduct 2 rounds of UG EAC counseling 2025. The schedule for each round including choice filling, seat allotment, document verification and allotment letter downloading will be announced on the official website. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि official website को बार बार हमें चेक करते रहना है अगर हमने इस काउंसलिंग पोर्टल पे रजिस्टर किया है तो. Stay tuned for more updates.